Hello friends, today we will start motion in a straight line chapter. Chapter name is motion in a straight line. Motion in a straight line. Now, the first topic is rectilinear motion. Rectilinear motion. So, what is rectilinear motion? If any body or particle treated as a point moves in a straight line, then its motion is said to be rectilinear. Motion मीन्स कोई भी जो पार्टिकल या बॉडी उसको अगर हम पॉइंट पार्टिकल मानकर चलते हैं और अगर वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तब उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. क्लियर? नाउ सेकंड इज डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? नाउ डिस्टेंस क्या होती है? कोई भी जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, फॉर एनी मूविंग पार्टिकल द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ traveled by the particle in definite time is known as the distance. If a particle starts from point A, initial point, this is the initial point of the particle, and its final point is, this is the final point. Particle starts from A and reaches to the point B, but it takes different length. This is the path. This is the path of the particle. Path of particle is this one. If we sum up the total length of the path, then it becomes a distance in a definite time. Particle is moving, then length of the total path in definite time interval is known as the distance. So it is defined as total length of a moving particle in definite time interval. डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर इसने जितना लेंथ ट्रेवल की उसका टोटल समेशन जो है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर, ये क्या होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज दे रिक्वायर्ड only magnitude. They required only magnitude and unit, and they have no direction. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जिनकी यूनिट होती है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस उनको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज SI unit of डिस्टेंस. डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या होती है? इट्स SI यूनिट इज मीटर. इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर. मीटर के लिए हम स्मॉल m सिंबल यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस के डायमेंशंस
जब इसकी यूनिट जो है मीटर है, डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट. विद इन स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन, मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन 0. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया डिस्टेंस. डिस्टेंस पार्टिकल है ना ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, ए से बी तक पॉइंट पर पार्टिकल आया, और यहां से यहां तक आने में इट टेक्स टाइम. इसको कितना टाइम लगा? टी टाइम. मीन्स यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, यूनिट टाइम के अंदर उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं. सो डिस्टेंस traveled by the particle in unit time is called as speed. इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड. नाउ दैट इज स्पीड is equals to distance upon time. Unit time means per unit time. Now we know that distance is a scalar quantity. Therefore speed is also a scalar quantity. Speed क्या हो गई? Scalar quantity हो गई. Speed is a scalar quantity. ये भी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड की जो ऐसा यूनिट है क्या होगी? नाउ वी नो दैट बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Distance is measured in SI unit is meter and time is measured in second. So its unit is meter per second. Now next is dimensions. Next is dimension of speed. स्पीड के डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस विद इन स्क्वायर ब्रैकेट मास, लेंथ एंड टाइम. नाउ SI unit is मीटर. ये क्या है? मीटर है. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. तो यहाँ पर मास की डिपेंडेंसी है? नहीं है. तो मास का डायमेंशन हो गया 0. लेंथ मीटर पावर 1 है तो लेंथ की डायमेंशंस हो गए 1. पर सेकेंड टाइम, पर सेकेंड के लिए ये हो जाएगा -1. सो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज m0 l1 t -0. नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड. What is the average speed? Now we observe that if a particle changes its speed for its journey in different time interval, it covers different distance, then instead of the speed we will calculate average speed. That is, it is defined as the ratio of total distance traveled to the time interval taken, by the particle. Time interval taken by the particle. Now average speed के लिए हमने s ले लिया या v ले लेते हैं. v स्पीड v एवरेज है. एवरेज के लिए हमने av इक्वल टू एवरेज. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो आया टोटल डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया डेल्टा s से अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. ये हो जाएगा टोटल टाइम इंटरवल. डेल्टा s इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल टू द
टोटल टाइम इंटरवल फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसके लिए उसने जो टाइम लिया उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज instantaneous speed. What is instantaneous speed? Now instant itself means at the given specific time or specific time. अगर कोई भी जो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसके मोशन है उसके पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर हमें स्पीड निकालनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड. नाउ फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेंड्स टू जीरो, मीन्स at that instant the time must be equal to zero, nearly equal to zero, or it is defined as the rate of change of distance with time, for a moving particle, instantaneously, or it is denoted by इसको डिनोट हम करेंगे v से. दैट इज v इज इक्वल्स टू, जब भी हम बोल रहे हैं एट द गिवन रेट ऑफ चेंज, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज speed of a moving particle at specific moment. Specific moment means given instant पर जो स्पीड होए उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे. इट इज डिनोटेड बाय v, इसको हम किसे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं. और मैथमेटिकली जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक मोमेंट मीन्स एट दैट instant the time must be zero, tends to zero. That is, we will take limit delta t tends to zero. This is limit delta t tends to zero. It is not equal to zero, but it tends to zero. Delta s by delta t, and from this v is equals to, whenever we take limit delta t tends to zero, delta changes to d. ये किस में बदल जाएगा, d, परफेक्ट डिफरेंशियल, ds by dt. ये क्या हो गया, ds by dt. मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम. मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. क्लियर? रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट डे करते हैं. थैंक यू.